Hello everyone, I hope that we are live here and welcome to Amix Live. A very good morning to all and I hope my audio and video is clear, right? Yes, I hope it will be clear and so welcome again, and in this series we was talking about the fluid mechanics, and we were seeing some SSCJE previous year's question chapter wise, obviously, and we have already completed the chapter 1, which is fluid properties. We have solved around 65 questions of that first chapter, and now from today onwards we will be jumping to the second chapter. And what is the name of the second chapter? It is hydrostatic pressures. And I'd rather I would say that the name of the chapter is hydrostatic pressure and its measurement as well. So let me write this. So it is hydrostatic pressure and its measurement. In this chapter, we will be solving problems of pressure measurement, and also we will be solving some problem about hydrostatic forces. Okay, so let us start with the first question of the second chapter. I hope you will like the chapter because it is a very basic and very easy chapter. And so okay, let us start with the first question. So the first question is saying which one of the following प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर. तो इनमें से कौन सा यूनिट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लीस्ट प्रेशर, सबसे कम प्रेशर को. ठीक है, तो इन दिस केस लेट मी टेल यू एट फर्स्ट व्हाट इज प्रेशर. What is pressure? Pressure is external normal force upon area. So the external normal force which is exerted on a surface area will be called as pressure. And one thing, that pressure is compressive in nature. Now, what is pressure according to the definition? It is external normal force upon area. So, if this is any surface area, then this will be pressure. So this is F, which are external normal forces, and this area is A, then pressure force, that means pressure will be F upon A. Now, what should be the unit of pressure? Obviously, this is force upon area. Okay, so the unit will be Newton per meter square, which is also known as Pascal. So this is the general unit of pressure. Now the question is asking here that what is the least value of the pressure unit. Okay, which gives us the least value, सबसे कम वैल्यू इनमें से किस यूनिट का है, राइट. तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि मिलीबार दिया हुआ है, mm ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है, ठीक है. तो आई होप दिस इज 1 mm ऑफ मर्क्यूरी. ओके, नाउ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, एंड आखिर में दिया हुआ है कि केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो लेट अस सी हियर कि पास्कल, that means 1 Newton per meter square. What is 1 bar? 1 bar is equals to 10 to the power 5 Pascal. Okay, then what, and this is equals to 10 to the power 5 Newton per meter square. Now, what is 1 millibar? 1 millibar is equals to 10 to the power minus 3 bar, which is equals to 100
Pascal or 100 Newton per meter square. Okay. Now, what is 1 mm of mercury? In the hydrostatic law, we will be encountered with a formula which is P is equals to rho into G into H. I hope I have solved using this formula in the first chapter. A question was given, what is the pressure intensity of a gas or of a liquid if the height is h? I hope I have solved the question. And with the same concept here, I will write that the rho of the Hg is 13,600, gravitational is 9.81, and the H here is given 1 millimeter, but I have to calculate it in a meter form, right? So it will be 10 to the power minus 3 meter. So it will be coming out as Newton per meter square, and if I calculate this, so 13,600 9.81 into, it will be coming out as 133.416 Newton per meter square. Okay, then let us come to 1 Newton per mm square. What is this? 1 Newton per mm square is equals to 10 to the power 6 Newton per meter square. If I convert mm into a meter, it will be coming out as 10 to the power minus 6, and it will be going up, right? So it is 10 to the power minus 10 to the power 6 Newton per meter square. And what is 1 kg force per semi square is equals to 9.81 Newton per semi square. And if I have to convert from semi square to meter square, it will be 9.81 into 10 to the power 4 Newton per meter square. So those are the units. So it is coming out, option D is coming out as 9.81 into 10 to the power 4 Newton per meter square. 1 mm of Hg is coming 133.416 Newton per meter square, where 1 millibar is coming out as 100 Newton per meter square, and 1 Newton, wait a second. So the options, 1 millibar is equals to 100 Pascal. This is 10 to the power 6 Pascal. This is 133.416 Pascal, and this is coming out as 9.81 into 10 to the power 4 Pascal, right? So what is the minimum? Minimum will be this. So here millibar is the right answer. I hope the first question is clear to all, and it was just a very basic question asking from the unit of the pressure, right? So we have not only discussed the question, but we have discussed about some forms of unit of pressure, right? Now let us move to the second question. I hope this question will be clear for all of you. Okay, let us move to the next question. It is saying that for a measurement of a small pressure difference, a mixture having a specific gravity of 1.10 is used. The magnification so obtained in the differential head shall be. So this question is coming from a differential manometer. Okay, and here the small difference between a force is give a flow, the small head difference between a flow is given, and they want us to magnify the difference between these 2 points. Suppose the first point is A and the second point is B. So what is the particular difference between A and B if the difference is so small? So how can we magnify this with the help of this manometer? Okay, so let us draw a diagram for better understanding. Okay.
let us assume 2 points A and B, right? Let us assume, and the pressure here is PA and the pressure is there PB. Okay, now if I connect a differential manometer is connected. Now let us assume that this is the liquid which is flowing through the pipe, and this is our manometric. Okay, and let us assume this as the datum. Now what is this distance from this point to this point? This is the distance, let us name is as x. Okay, and what is the distance of this datum? That means the manometric pressure head, the distance is measured at as h. Okay, now let us assume the rho of this fluid, the flowing fluid. Let us assume the rho is at the density as I denoted the density as rho here, and the manometric density is rho m. Let us assume this as the manometric liquid's density, right? Now let us calculate, and here obviously this is the flowing fluid will exert pressure, and when it will exert pressure on that manometer, so the level will rise in the other column of manometer, and we can measure this with scale, right? So this is the somehow the principle of an differential manometer. Okay, now let us calculate that what will be the pressure head, and what is the difference of pressure between PA and PB. So according to the manometric calculation, it will be PA when I am coming downwards, so I have to use the positive form, right? So PA plus, this is what, this is a rho which is flowing fluid, so this is rho, and the height it is giving exerting the pressure, so rho into g, and the height it is exerting the pressure is x plus h. This is x plus h, right? So x plus h, this is the pressure which our fluid is giving to the manometric fluid, right? Now it will be is equals to, I will come here and I will measure from this point, so this is PB plus this fluid up to this point is rho, so rho g, and the height will be x plus, and this height up to the datum it is rho of manometric g into this height is h. So this is the whole equation of the manometric differential manometer, right? Now PA plus, it will be rho g x plus rho g h, and what will be this PB plus rho g x plus rho m g h. Now rho g x and rho g x will be cancelled out. Okay, so I need to calculate the pressure head, the difference between head of point 1 and point 2, that means PA minus PB, and what is this PA minus PB will equal to manometric pressure minus rho g h. Okay,
Now let us come this side of the page. Can I denote this, the pressure, it is showing the pressure at point A, right? So can I denote this as rho, which is the flowing fluid, so rho into G into, let us suppose the pressure head over this point in in the point A, the pressure head, let us assume this as HA, okay, and let us assume the pressure head at the point B is HB, okay, and now this is rho m gh minus rho gh. Here I can also do one thing, I can take the gh as common and I can put manometric density and our fluid density in the bracket. So gh is taken common and it is rho m minus rho. Now in this case we can take common as rho g and HA minus HB is there. So let us take let us name this as del H or H dash as the difference between 2 points head. So let us name this as H dash is equals to GH rho m minus rho. GG will be cancelled out. So we are having the original head difference which is equals to H, that is head difference which is measured in the manometer, and this rho will be come down, this rho will be come here and it will be rho m upon rho minus 1. So this is the formula which is the head difference, original head difference in the flowing fluid will be equals to the measured head difference in the manometer into, can we say, the rho m upon rho as the relative density? Obviously, because what is relative density? Relative density is the ratio between any two density of fluid, but where the specific gravity is rho of liquid to standard rho of standard liquid, that is water. But if I use this for gas, that rho of any gas upon rho of water, it will be called as relative density. And otherwise, if it is both are in fluid form and if I have to divide that with the relative the density of standard fluid, it will be called as specific gravity. Thus we can say that all specific gravities are relative density, but all relative densities are not a specific gravity, right? So it is, let us name this rho m by rho, which is relative density, and somehow it can be used as like specific gravity also, because let us suppose that this manometric fluid is Hg and this rho is water. So obviously it will be coming out as the specific gravity of Hg, right? So minus 1. So this is the formula, and here it is, the question is saying us that for a measurement of small pressure difference, a mixture having specific gravity of 1.10, तो ये दिया हुआ है हम लोगों का, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को आंसर चाहिए होगा, तो ये सॉल्व करेंगे, तो H डैश हमको निकालना है, तो H डैश will be H, this is given specific gravity is given as what, that is given as 1.10 minus 1. So what is this? So specific gravity is 1.10 and it is minus 1, so it will be height into 0.1. if I multiply both with 10, so it will be 10 H dash is equals to H. So this is the answer, it will be called as 10 times. Obviously the answer will be 10 times of the original pressure head, right? So the thing is, if I get the, or if I get the original pressure head as 1, okay, only 1 meter, if the original pressure head difference between A and B is 1 meter, then we can find this, we can magnify this in our manometer as 10 meter. So that is the main phenomenon which is actually going, and this is the main concept behind the question. So the answer will be 10 times. This is the right answer. I hope the question is clear to all, and
I hope this is clear, and let us move to the next question. The question is saying that in a differential manometer, the use of mercury is advantageous when the pressure difference is what? Now let me tell you that if, let us just assume that in a container or in a pipe, water is flowing, right? Water is flowing there. Now the head difference between 2 points of water is very high, very high. Okay, and then if I use any manometer, with a manometric fluid of less density, lesser density or equivalent density of water, so what will be that? We just saw in the previous case, हमने just पीछे ये देखा कि ये वाला जो रो था, फ्लोइंग फ्लूइड का जो डेंसिटी था और मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो डेंसिटी था वो लगभग सेम था, क्योंकि उन लोगों का स्पेसिफिक जो ग्रेविटी निकल कर आया था वो था सिर्फ 1.10। इसका मतलब हम लोगों को मैनोमेट्रिक फ्लूइड का पता है कितना डेंसिटी है, 1100। सो ओनली ये अगर होगा तो एक्चुअली दीज आर ऑफ लो डेंसिटी फ्लूइड्स आर यूज जनरली टू फाइंड द स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। ओके, सो अगर दोनों पॉइंट में डिफरेंस हेड अपना प्रेशर हेड बहुत कम होगा तो उसको मैग्नीफाई करने के लिए हम लोग जो मैनोमीटर यूज करते हैं उनमें हम देंगे लोअर डेंसिटी वाला कोई भी मटेरियल, राइट। लेकिन उस तो यहाँ पर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग अस फॉर द large amount of the use of, like they are asking the when we use the mercury in the manometer। okay, तो mercury का कितना है डेंसिटी, बहुत ज्यादा है, तो that is 13,600। तो अगर बहुत ज्यादा हेड डिफरेंस होगा फ्लो में, पॉइंट ए और पॉइंट बी में बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस होगा तो उसको अगर हम सेम, मान लो इसका रो है यूनिट, इसका अपना डेंसिटी है रो और इसका जो है वो है रो प्लस 5, लेट अस एज्यूम। तो इसका अगर इतना ज्यादा हेड डिफरेंस हो जाएगा तो ये जो मैनोमीटर का राइज होगा वो निकल कर चला जाएगा, हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मैग्नीफाई कर देता है, ना कि वो कंप्रेस करके बताता है, कम कम में बताता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको ज्यादा डेंसिटी वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड चाहिए जो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने पे भी ये ज्यादा राइज ना दे, ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो इसमें आंसर होगा कि ये लार्ज जब डिफरेंस होता है ना तब हम यूज करते हैं मैनोमीटर में अपना एच को। ठीक है, और भी कुछ है कि एच का जो मर्क्यूरी है, एच का यहाँ पे लिख देता है कि एच वेरी हाई डेंसिटी एंड इट हैज अ वेरी लो वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर बहुत लो होता है, तो इसके लिए कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होता। ठीक है, एंड थर्ड, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है मच लेस देन वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर से कम होता है। ठीक है, बहुत बहुत कम होता है, तो ये जल्दी फ्रीज भी नहीं होता। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से हम जब लार्ज डिफरेंस आता है कोई भी दोनों पॉइंट में तो हम यूज करते हैं एज ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड मर्क्यूरी को। ओके, let us come to the next question. It is asking gauge pressure at a point is equal to, what is gauge pressure? Let us know right now. तो ठीक है, चलो, तो let us, this is absolute, this is absolute pressure. Okay, so beyond this point there is no pressure, this is absolute zero pressure. This line, this datum line is saying us the absolute zero pressure, इसका मतलब है इसके नीचे प्रेशर नेगेटिव में जाएगा, जिसका मतलब है कोई प्रेशर के नीचे है नहीं। ठीक है, प्रेशर नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये जीरो है, इससे स्टार्ट होगा,
इसके नीचे कोई भी प्रेशर नहीं है। दिस इज पी एटमॉस्फेरिक। ये अगर पी एटमॉस्फेरिक है तो अगर हम इस क्वांटिटी को मेजर करना चाहे, मान लो कि दिस इज सम प्रेशर, ओके, ये पी है, तो अगर हम इस क्वांटिटी को फ्रॉम दिस डेटम, अगर हम इस डेटम से इस क्वांटिटी को मान ले, ये लो, ये अगर माने, इस डेटम से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज पी एब्सोल्यूट। इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट। बट इफ वी वांट टू कैलकुलेट और मेजर इट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम इसमें इसको मेजर करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, हम मेजर कर रहे हैं उस पी वाले प्रेशर को, तो जो मेजरमेंट हम लोग को निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे पी गेज। इसको हम बोल देंगे गेज प्रेशर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां से देखिए कि पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू, आई कैन से दैट दिस इज पी एटीएम। According to the absolute, this is P atm. The value is P atmospheric. So we can say that P absolute is equals to P atmospheric plus pressure which is measured from the atmospheric, which is called as gauge pressure, right? तो हम लोग को निकालना है क्या, गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू, तो गेज प्रेशर क्या होगा, गेज प्रेशर विल बी P absolute minus P atm. So it is given as absolute pressure plus atmospheric pressure. No, this is not the right answer. It is given as absolute pressure minus atmospheric pressure. Yes, this is the right answer. Absolute pressure minus atmospheric pressure. So this is the right answer. I hope this concept is clear, and this will be using many times, right? You have to take this in your mind. आपको ये याद में रखना होगा कि कब हम एब्सोल्यूट प्रेशर के मेजर में टर्म में मेजर करेंगे, कब हम गेज प्रेशर की टर्म में मेजर करेंगे, ये you have to remember, right? Now in this question this is saying us that Pascal's law states that pressure at any point in a fluid at rest has, तो एक सेकंड, ओके, हाँ, तो Pascal's law states that the pressure at any point in a fluid at rest has, बोल रहा है कि डिफरेंट प्रेशर होता है सारे डायरेक्शन में, या बोल रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड होता है इन ऑल डायरेक्शन, जीरो मैग्नीट्यूड होता है, या नॉन ऑफ द अबव होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम देख ही लेते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या बोलता है। Pascal's law is saying us that in a static fluid, pressure at any point, is equal in all direction. तो अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, अ स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, कोई भी स्टैटिक फ्लूइड जो फ्लूइड रेस्ट में है, उनमें प्रेशर एट एनी पॉइंट, कोई भी अगर एक आप पॉइंट मान लो, तो ये बोल रहे हैं कि इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सो इन दिस केस, no, C is not the right answer. Zero magnitude in all direction is not the right answer. This answer is same magnitude in all direction. This should be very clear that if this is a container and it is containing some amount of fluid, let us assume that this is a container which is containing some fluid, right?
Now let us check out this point. Let us name this as point A. So pressure at that point A will be equal in all directions. So all the pressure it is being exerted by the fluid at that point will be P, 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 P. Same. But if I assume another point over this is the second point. Let us name this point as B. And the pressure here is exerted also will be same in all the direction, but let us name this as P dash, P dash, P dash, P dash, P dash. Pascal has never said that P dash is equals to P. He has never said that the pressure in all the point in all the direction is same. No, he has not said that. उन्होंने बोला कि एक पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार ही फोर डायरेक्शन, फोर नॉट एवरी डायरेक्शन, ऑल द डायरेक्शन, सब डायरेक्शन से जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा टू दैट पॉइंट विल बी सेम. बट अगर हम कोई दूसरा पॉइंट में आता है तो दूसरा पॉइंट में प्रेशर में भी डिफरेंट, उन फर्स्ट पॉइंट से एज इन कंपेयर विद द फर्स्ट पॉइंट मे बी द प्रेशर इज डिफरेंट with the second one, but it will be same in all the direction. I hope this is clear. Okay, you have to keep this in mind that all the like the pressure is same at all the point from all the direction is not a true statement, right? It is same for only one point, all direction. The pressure which is coming from all the directions are the magnitude of the pressure will be same for a point A, and for point B there is also the magnitude of the pressure which is exerted to the point will be same, but these pressure and these pressures are not same because pressure is increasing with the depth. So at any point the pressure from all direction will be equal. That is Pascal's law. I hope this is clear, and let us go to the next question. And it is saying us that the pressure of a liquid measured with the help of a piezometer tube. कौन सा प्रेशर हम पीजोमीटर की हेल्प से नापते हैं? क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर? तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी गेज प्रेशर. Wait a second. Okay, yes. Wait. Okay. So it will be gauge pressure. Obviously, the piezometer is a device or a tube which is actually used to measure the gauge pressure. So how actually the piezometer, how does it look? Let us if this is, wait, if this is a flowing pipe, let us suppose there is water, and this is the liquid is flowing, right? It is flowing over in the z direction, it is flowing. Okay, so it is in the z direction towards me, it is flowing. Okay, so it is flowing like this or it is flowing like this. This piezometer is connected, it is nothing but a tube which is exposed to the atmosphere. Okay, this is a tube, this is a tube which is exposed, and we will see that the as the fluid has a tendency to flow from high pressure to low pressure. When it is flowing on a pipe, it will be compressed and it will be having a high pressure, बहुत ज़्यादा pressure होगा पाइप के अंदर. जब it will be exposed to the P atmosphere, ये तो open है, ये तो P atmosphere है ना. Whenever it will be exposed to the P atmosphere, it will going out and it will, let us assume that it is making somehow this pressure. Somehow it will be making this pressure, right? So this height will be achieved. We have just calculated the height, and here P ATM is taken as 0, and this height will be saying us the gauge pressure. So it will be like, if I calculate from this point,
and if I start calculating from this point, so PATM is considered as 0 as this is a gauge pressure, राइट। तो गेज प्रेशर में डेटम क्या होता है, पी एटमोस्फेरिक होता है, तो पी एटमोस्फेरिक को हम यहाँ पर जीरो मान लेंगे। तो इफ आई स्टार्ट कैलकुलेट फ्रॉम ए पॉइंट टू डी पॉइंट, इफ आई कम टू दिस पॉइंट, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज सी, ओके, सॉरी सी का आएगा, ये बी आएगा। तो ए से बी अगर हम मेजर करें और दिस पॉइंट इज, लेट अस नेम दिस एज के पॉइंट, सो एट फ्रॉम ए इफ आई कम, सो इट इज पी एटमोस्फेरिक व्हिच इज ऑब्वियसली अ जीरो for gauge pressure, so let us calculate it as 0. So 0 plus what is this, from I will again calculate from K to B, right? So this is the rho, let us suppose the rho of the density of the fluid is taken as rho here, okay? So this will be rho into G into H. So this will be the pressure which is actually flowing on the pipe. With the pressure, the pipe, the fluid is actually flowing in the pipe with the pressure we have to measure, and this is the formula. So P will be equal to rho G H, and the trick here is that P is in gauge. That is the thing. So we use this instrument called piezometer for measuring the gauge pressure. I hope this concept is also clear for you. So look, we are not only solving the question with the help of the formulas, but also we are discussing some little concepts. So if you are in semester, if you are in you are in your preparation of fluid mechanics, it will be also helping you to like grab some little concept, and with the help of this concept, obviously you can crack some good questions, and you can also give answers some to some theoretical questions as well, and as well as some numerical can also be solved by this formulas. Okay, so not only the theory part I have discussed, I have also derived the formula. So that is the thing. This is not only a question practice session, that is, you can say, concept through question session, right? I hope you will be enjoying this course. And okay, so let us come to the next question. Measurement of pressure difference between 2 points is generally done by using which instrument? ठीक है, तो तीन ऑप्शन दिया हुआ है कि वेंचुरीमीटर होता है, पीटो ट्यूब होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर या नॉन ऑफ द अबव होता है। ठीक है, तो ये क्या हमको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पॉइंट का जो द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, प्रेशर डिफरेंस, तो हम पहले ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुके हैं कि प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज टू यूज व्हाट, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो इट विल बी द राइट आंसर। प्रेशर डिफरेंस को हम डिफरेंशियल मैनोमीटर में यूज करते हैं। वेंचुरीमीटर ये अपना फ्लो रेट मेजर करने के लिए काम आता है। पीटो ट्यूब वेलोसिटी को निकालने में काम आता है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट। ये सब काइनेमेटिक में मिलेगा। ओके, डिफरेंशियल मैनोमीटर इज द राइट आंसर, कि ये यूज करते हैं दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है हेड का या प्रेशर डिफरेंस जो है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग अस okay. So this question is saying us to calculate the equivalent okay, इसमें प्रेशर, अच्छा ये बोल रहा है कि प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, उस ऑयल का दिया है 0.9, तो इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर। तो ये पर्टिकुलर अपना थियोरी पार्ट से आया है कि ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का आप नाम दे सकते हो कि कन्वर्जन of one fluid column to another fluid column। इसका मतलब है सेम प्रेशर को हम डिफरेंट दोनों फ्लूइड की अगर राइज से या कॉलम से कन्वर्ट करना चाहे, तो कि सेम प्रेशर एक फ्लूइड में हम मेजर किए एंड सेम प्रेशर अलग फ्लूइड में हम मेजर किए, तो जो दोनों एच का डिफरेंस आता है बेसिकली। तो लेट अस मेक यू इमेजिन दैट। ठीक है,
मान लो कि ये दोनों कंटेनर है, दोनों में अलग अलग फ्लूइड डाला हुआ है। तो मान लो ये somehow a fluid which is a density of rho with density rho, यहाँ पर एक फ्लूइड है with density of rho 1 मान लो, रो इसको रो 1 मान लेते हैं, इसको रो 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम एक प्रेशर को मेजर किए। आफ्टर मेजरिंग द प्रेशर, ये प्रेशर को मेजर किए, तो मेजर करने के बाद हमको जो मिला कि एट अ डिस्टेंस और एट अ हाइट ऑफ h1 इट गिव्स अस द प्रेशर। इसका मतलब है कि ये प्रेशर को अगर इस फ्लूइड के फॉर्म में, अगर इस फ्लूइड की मदद से हम निकालना चाहे तो इस प्रेशर को हम ऐसे निकाल देते हैं रो 1 g इंटू h1। रो 1 डेंसिटी का कोई फ्लूइड अगर h1 डिस्टेंस तक, h1 डेप्थ तक प्रेशर एग्जर्ट करता है तो p अमाउंट ऑफ प्रेशर वो एग्जर्ट करता है। और फॉर द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड व्हिच हैज द डेंसिटी ऑफ रो 2, he takes the height, let us suppose as h2. So what is the pressure for the second case? Rho 2 g into h2। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लूइड का डेंसिटी रो 1 है वो h1 हाइट तक अगर डेप्थ में प्रेशर एग्जर्ट करता है तो p अमाउंट ऑफ प्रेशर वो एग्जर्ट कर पाता है। वेयर एज फॉर अ फ्लूइड और फॉर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 2 उसको h2 डिस्टेंस और h2 डेप्थ चाहिए होता है वो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर को एग्जर्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या है, दोनों का रो डिफरेंट है, इसके लिए सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए उनको दो अलग अलग हाइट की नीड है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फ्लूइड को रो 1 को रो 2 की कॉलम में अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो दिस पी दो बोथ द प्रेशर्स आर सेम, पी दोनों का सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि रो 1 जी एच 1 इज इक्वल्स टू रो 2 जी एच 2। G obviously will be cancelled out, then the relationship will be coming out as rho 1 H1 is equals to rho 2 H2. And this is the conversion formula. In this question, it is, you can see that it is already given that let us suppose that this equivalent to water, let us suppose this water is rho 1. For that case, water is apna rho 1. And what is H1 given? H1 is given as 4.5. So H1 is given as 4.5. And the specific gravity of the oil is given as 0.9 obviously. So if the oil specific gravity is 0.9, so what will be the rho density of oil? It will be 900 obviously. So and let us assume this as rho 2 in this case, rho 2 is 900 and we need the head or we need the height which it will take to exert same amount of pressure, and let us assume this as h2. So according to the formula it will be coming out as rho 1 h1 is equals to rho 2 h2, and this is 1000 into 4.5, the height is given, and this is 900 into h2 we have to calculate. So h2 will be is equals to 4500 divided by 900, and it will be coming out as 5. So h2 will be nothing but 5 meter. So this was the concept behind the question, and this is the right answer. So the answer is 5 meter. I hope this concept is also clear to you, and this was a very cute concept according to me. I think that is a very easy concept to understand, but you will find question from this concept, and when I will be solving the question in this chapter na, you will find many question from this concept. ये सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिलने वाला है इसी चैप्टर में. So this is a very important concept as well, as it is a very easy concept. And the next question is, मैनोमीटर is a device for measuring. हमने अभी अभी बात किया कि मैनोमीटर एक्चुअली, देखिए मैनोमीटर दो तरह का होता है, ठीक है. मैनोमीटर is basically, मैनोमीटर is a pressure measuring devices. या इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो. मैनोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं. तो मैनोमीटर इज बेसिकली और ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू.
First is simple manometer. Second one is called as differential manometer. One is simple, second one is differential manometer. So what does simple manometer do? It helps us to measure pressure at a particular point. एक पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर मेजर करने के लिए वी यूज सिंपल मैनोमीटर, वेयर एज डिफरेंशियल मैनोमीटर, I have already told you in this class, differential manometer is used to measure pressure difference between two points. दोनों पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए वी यूज डिफरेंशियल मैनोमीटर. सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज द राइट आंसर, pressure measuring device. You can note these points, what I am writing. You can also note this point and this will be very helpful for you. Okay, the next question, the pressure in meter, same question आया, same देखो उसी concept में same question, the pressure in meter of oil which has a specific gravity of 0.85 equivalent to 42 meter of water. तो ये बोला हुआ है कि आपको ये देखिए rho 1 h1 is equals to rho 2 h2. This is the concept. So please explain simple manometer. Simple manometer is like we use simple manometer to measure pressure at a point. ठीक है, सिंपल मैनोमीटर को हम सिर्फ एक पॉइंट के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. सिंपल मैनोमीटर समहाउ लुक्स लाइक दैट. इफ दिस इज द पॉइंट ए, मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ का प्रेशर हमको मेजर करना है, तो दिस इज समहाउ a simple manometer looks like. इसमें in this pipe there is our fluid, that is actually the fluid which we want to measure the pressure, and in this U-tube manometer we have the manometric fluid. Let us see. This is manometric fluid. तो पहले क्या होता है, जब ये यूट्यूब मैनोमीटर नॉर्मली रहता है तो इसको ऐसा दिखाया जाता है, तो ये है यूट्यूब मैनोमीटर. ठीक है, तो इसमें जब ये कनेक्टेड नहीं होता, ये उस पाइप से या जो भी जहां का प्रेशर हम मेजर करना चाहते हैं उस पॉइंट में जब ये कनेक्ट नहीं होता ना, तब इन दोनों का लेवल सेम होता है, क्योंकि बोथ आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द लेवल ऑफ बोथ विल बी सेम. ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो होता है उसका लेवल दोनों जगह सेम होता है, क्योंकि सेम प्रेशर में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है. लेकिन द मोमेंट व्हेन वी जस्ट कनेक्ट दिस टू दिस फ्लो, जब इस फ्लोइंग पाइप में हम इसको कनेक्ट कर देंगे टू मेजर द प्रेशर, और कोई भी लिक्विड की प्रेशर मेजर करने के लिए जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, दिस कंटेनर फ्लूइड विल एक्सर्ट प्रेशर, ये इसको प्रेशर एक्सर्ट करेगा. ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आएगा और उस तरफ ये ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, तो इसमें हम मेजर कर सकते हैं कि इफ दिस इज कॉल्ड एज द डेटम, तो ये कितना राइज हुआ. पहले मान लो कि इस पॉइंट में था दोनों ही, ठीक है, तो इससे ये कितना राइज हो गया ना, ये एच हम कैलकुलेट कर देंगे. उसके बाद वी नो द रो एम मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो डेंसिटी होगा उसको वो हमें मालूम है. ठीक है, तो एच इज नोन टू अस एंड उसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, रो मालूम है, एच मालूम है, तो इस ये वाला प्रेशर हम मेजर कर देंगे, तो ये वाला प्रेशर जो आएगा वही होगा ये अपना कंटेनर वाला फ्लूइड का प्रेशर. तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं रो एम जी इंटू एच, तो ये जो प्रेशर निकल कर आता है वही हो जाएगा अपना प्रेशर. एक्चुअली ये कैलकुलेट होगा कि ये पहले ये पी ए है, तो पी ए हम पहले प्लस करेंगे, तो पी ए प्लस ये वाला हाइट मान लो कि कुछ एक्स दिया हुआ है, तो ये होगा कि रो इंटू जी इंटू एच होगा. उसके बाद ये तो डेटा में ये जितना है वो उतना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में उतना आएगा. मान लो ये हाइट एम है, तो ये क्या होगा, रो एम इंटू जी, और उसमें सेम है, ये हाइट एम है, रो एम सेम फ्लूइड है, तो ये हाइट विल बी कैंसिल्ड. ठीक है, ओके ओके ओके.
तो ये हो गया। ओके, ये क्वेश्चन तो हम देख रहे थे कि ये ρ1 H1 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें ρ1 मान लो कि ρ1 है वाटर वाला, तो ये 1000 है। इसमें दिया हुआ कि वाटर लेवल है 42.5, ये दिया हुआ है ना, ये देखो 42.5 मीटर इज द वाटर हाइट विच एक्चुअली occur in water. And now ρ2 we have to calculate specific gravity is given as कितना दिया हुआ है, ये 85 दिया है, तो 80.85 दिया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम रो ऑफ दैट वेल निकालना चाहेंगे तो ये आएगा 850 के आसपास, तो 850 हो जाएगा। और H2 तो हमको निकालना है, तो ये आएगा H2 एंड दिस विल बी 4250 बाई 850। तो इसको शायद 4250 डिवाइड बाई 8505, एक सेकेंड, 85,042.5। हाँ तो ओके, 1042.5 ओ, ये 5 है ये, और एक जीरो आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1000 इंटू इसमें, सॉरी मेरे मेरे गलती है, माई कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये 42,500 आएगा, इसका मतलब ये आंसर आएगा 50 मीटर। तो इसका आंसर है 50 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट है यार, ρ1 H1 इज इक्वल्स टू ρ2 H2, ठीक है। माय गॉड, so this is a very important question. Look at, ओके तो ये बोला हुआ है कि पर गेज प्रेशर ऑफ ए, गेज प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि ए इज नेगेटिव में है, मतलब ये नेगेटिव में गेज प्रेशर है। इसका मतलब क्या है पता है कि ये मान लो पी एटीएम है और ये अपना पी एब्सोल्यूट है। नेगेटिव में प्रेशर है, इसका मतलब है इसको बोलते हैं वेकम प्रेशर, ठीक है। ये वाला प्रेशर है, तो देखो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो -10.89 आता है, किलो पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। ये है, तो इसका क्या चाहिए इनको, इसको चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द गेज लिक्विड। तो ये लिक्विड बी का स्पेसिफिक ग्रेविटी इनको चाहिए है, ठीक है। तो इसको हम इक्वल कर देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जस्ट इसको हम करेंगे क्या, ये देखो ये है अपना हेड डिफरेंस दिया हुआ है कि इसमें हाइट का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं कि ये इसका गेज प्रेशर दिया हुआ है कि ये है पी ए, अगर इसको बोलेंगे पी ए, फिर ये प्लस होता है कितने तक, ये अपना एक फ्लूइड है, ये चलता है यहाँ तक। तो ये तो सेम फ्लूइड है, ये अगर डेटम है, ये देखिए ये डेटम है, तो ये वाला फ्लूइड और ये वाला फ्लूइड कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर दोनों का ये इट विल बी कैंसल्ड आउट, ओके। तो सिर्फ इसका हमको प्रेशर निकालना होगा, तो ये हम इसको यूज कर दे रहे हैं कि इसका कि दिया हुआ है शायद, ये इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.60। तो अगर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.6, देन इसका रो क्या होगा 1600, ठीक है। इसका रो हो जाएगा 1600। तो पी ए होगा, उसके बाद ये प्लस में होगा पी ए प्लस अपना रो वन मान लेते हैं इसको, चलो मान लेते हैं रो वन जिसका है 1600, ठीक है। एक सेकंड, हाँ तो रो वन जी इंटू H1 कितना है, देखो H1 है 3.200, 3.200 माइनस ये क्या है 2.743, ये है, ठीक है। 3.200 माइनस 2.743, ये हो गया ये वाला पॉइंट। डायरेक्ट जंप करेंगे उसमें, उसमें जाएंगे, इसके बाद क्या है ये पूरा एयर का प्रेशर है। तो ये जो डिस्टेंस है लेट अस टेक एज ये मिनिमम, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इस साइड से हम अगर आएंगे तो इसका हम देखेंगे ये डेटम है, फिर से ये डेटम है, ये अगर डेटम है तो दिस विल बी अगेन जीरो, द प्रेशर विल बी जीरो है। तो जी से ई का हम सिर्फ अगर निकाल ले इनका, तो इसका दिया है कि इसको हमको चाहिए क्या, इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो इसका रो हमें नहीं मालूम है, ठीक है। इसका रो हमको नहीं मालूम है,
तो इसको ये एक्चुअली प्लस में होगा, हाँ डाउन है प्लस में होगा, तो रो इसको हम बी मान लेते हैं, रो बी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जी आएगा, और हाइट क्या है, हाइट है 3.429 माइनस 3.048, so this is the height, okay, and this is equals to जो ये वाला प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला एक्चुअली पी एटमोस्फेरिक है, ठीक है। तो पी एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर आएगा तो पी एटीएम, तो यहाँ पे गेज प्रेशर दिया हुआ है, तो पी एटीएम इज इक्वल टू 0। सेम है, ये ओपन है तो इसमें भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी एटीएम, तो ये भी हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 है पी एटीएम, अभी गेज प्रेशर के रिस्पेक्ट में पी एटीएम इज 0। नाउ इसमें पी ए क्या दिया है कि -10.89 प्लस रो वन है 1600 इंटू 9.81, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस आता है क्या आता है, 0.3 कुछ आएगा, ये तो 0.475 ये है। फिर प्लस क्या है कि प्रो बी, ये भी हम निकाल लेते हैं, 3.429 माइनस 3.048, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 0 पॉइंट, ओके। तो ये जी इंटू ये होगा, तो जी के साथ अगर मल्टीप्लाई भी करते 9.81 से तो आता है 3.73761 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे हम, लुक एट केयरफुली कि ये रो बी इंटू 3.373761 इज इक्वल्स टू, ये जाएगा 10.89, ये माइनस होगा, ये माइनस किसके साथ होगा, इस रो के साथ होगा, राइट। तो 1600 इंटू 9.81 into 0.475 and it will be wait 745.6, ओ यस, अब सिली मिस्टेक हो गया मेरे से, ये किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो जब इसको मैं पास्कल में कन्वर्ट कर दूंगा ना तो ये आ जाएगा 1, ये 890, हाँ दिस इज नाउ राइट, ये पास्कल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसको अगर हम ये कर देंगे तो ये आएगा फिर 10,890 माइनस 7,455.6, अगर इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा एज 3,434.4, और अगर रो निकालना चाहे तो ये कर देंगे डिवाइड बाय 3.73761 पर 3.73761 and this will be coming out as 918.87, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 918 बाई 1087, तो इसको अब अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि एज ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 मान के ये आंसर एक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर इससे 1000 में डिवाइड भी करूँ तो इसका आंसर आ जाता है तो 0.91 समथिंग, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी 1, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, एंड और एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद आज, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये आई विल डिस्कस दिस टुमारो, ठीक है। क्योंकि इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट बोलना होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जो इंक्लाइंड प्लेन में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, तो ये आई विल डिस्कस कल। तो ओके देखो, ये बोला है कि बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द राइट आंसर। बैरोमीटर ये भी कल हम डिस्कस करेंगे बैरोमीटर कैसे आता है, ठीक है। एंड
Okay, I hope that you are liking the sessions. If you like the sessions, please do subscribe to the channel and don't forget to like the video. And the most important thing is, if you have any doubt, you can obviously comment below. After the lecture, you can comment, you can post your doubt, and obviously I will try my level best to solve your doubt. And I hope that you are liking the videos, and thank you for like taking part with us. Thank you for attending the classes, and I hope that I am somehow I can help you by 1% in your preparation, in your gaining the knowledge in fluid mechanics. And ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल के सेशन में करेंगे, बिल्कुल मज़े से करेंगे। थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी सीखेंगे, थोड़ा बहुत हम ऐसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और कल आने वाला है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंक्लाइंड फोर्स के लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे एक्ट करता है। कोई वर्टिकल होगा या कोई हॉरिजॉन्टल में ऐसे डेप्थ में पड़ा होगा कोई प्लेट, कोई सरफेस, तो उसमें कैसे एक्ट करेगा। ठीक है, ये सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी